we are getting very fast decision. As mentioned earlier, we have made most of the policy afresh. कैबिनेट से हमें इतना क्विक अप्रूवल मिलता है और आगे भी जो सुझाव आते हैं, we are one of the fastest moving states as far as making of new policies or amending policies to suit the industrialist requirement is concerned. So मैं आप सभी का पुनः आभार व्यक्त करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी के सहयोग से हम टारगेट केवल अचीव ही नहीं कर पाएंगे, इसको एक्सीड कर पाएंगे. थैंक यू. Well, thank you very much, sir, for your informative and motivational words. Thank you very much. Now, please help me for the special address, Mr. Deepak Jain on dais. Just a humble request, can we just bring in some energy in order to welcome Mr. Deepak Jain, Chairman CII Northern Region and Chairman Lumex DK Jain Group. Sir, all over to you. आदरणीय मुख्यमंत्री श्री धामी जी, डॉक्टर संधू, राधा जी, आनंद जी, dignitaries on the dais, friends from the media, पहले तो सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने CII को इस मंच पे और आपके जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है उसके साथ पार्टनरशिप करने का एक सुनहरा अवसर दिया. थैंक यू वेरी मच. सर, इसी होटल में 21 अगस्त को हम मिले थे एंड आई वॉज वेरी डीपली इम्प्रेस्ड जब आपने थोड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को वन ऑन वन, मुझे खुद नहीं पता था कि मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी है स्टेट के अंदर, बट आपके टीम को एग्जैक्टली पता था एंड वर डिटेल्ड प्रिपेयर्ड ऑफ हाउ बेसिकली द इन्वेस्टमेंट्स वर. एंड आई थिंक आदरणीय मुख्यमंत्री का बस एक कहना था कि हम निवेश और रोजगार को कैसे और इस स्टेट के अंदर लाएं. मुझे लगा था कि जब मैं इन्हें मिला हूं, मैं एक CII, मैं नॉर्दर्न रीजन के बारे में बात करूंगा, बट आज मैं CII नॉर्दर्न रीजन के बारे में नहीं, बट थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं. मैं एक ऑटो मैन्युफैक्चरिंग हब से हूं. यूजुअली हिल स्टेट्स में टूरिज्म, इको टूरिज्म, हेल्थ केयर, सर्विस सेक्टर वो ज़्यादा बेसिकली बढ़ावा करता है, बट आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि 2007 से उत्तराखंड स्टेट जो है उसमें आई थिंक एज अ हिल स्टेट ऑटो इंडस्ट्री को सबसे बढ़ावा मिला है. और पूरे भारत देश में जो ऑटो इंडस्ट्री है उसके अंदर डिफरेंट स्टेट्स के अंदर उनके फुटप्रिंट्स हैं, बट अगर हिल स्टेट की बात करूं मैं तो आई थिंक उत्तराखंड इज अ लीडिंग हिल स्टेट फॉर ऑटो इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट्स. इसमें दो चीज़ें सर, ऑटो इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है और मैन्युफैक्चरिंग GDP की 50% जो बेसिकली योगदान है वो ऑटो इंडस्ट्री का होता है. उसके अंदर जो है सिर्फ दो चीज़ की आवश्यकता है, एक है लेबर, दूसरा है लैंड. एंड मैं अपना जो एक्सपीरियंस कहता हूँ, आज हमारे पास 1300 कर्मचारी हैं 5 यूनिट के अंदर. इट इज़ अ मीडियम एंटरप्राइज यूनिट जो एक बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए काफ़ी एक बैकबोन है. बट इन दिस फ्रॉम 2007 द लेबर रिलेशनशिप्स हैव बीन सो गुड दैट जो हमने इन्वेस्टमेंट 2007 से शुरू की थी, आज 2023 में उसे 3 गुना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स करके हमने करीबन 150 करोड़ तक 200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट तक ले गए, जो हमने 50 करोड़ से स्टार्ट करी थी. सेकंड, आई थिंक जो जेंडर डाइवर्सिटी जो आपको डिफरेंट स्टेट्स में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर नहीं मिलती, आज मैं ये कहूँगा कि एटलीस्ट इन माई कंपनी द जेंडर डाइवर्सिटी इज़ द हाइस्ट. एक प्लांट में हमारे पास 45% जेंडर डाइवर्सिटी है एंड एज अ स्टेट वी हैव 20% जेंडर डाइवर्सिटी. सो दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग बिकॉज ऑफ कॉर्डियल रिलेशनशिप. संधू साहब ने जो बात करी कि क्यों बेसिकली इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, यहाँ पे
मेरी जो कंपनी है 2007 से आज 2023 तक, उसके अंदर ये एक्चुअली एग्जाम्पल है कि वी हैव बीन डूइंग दैट। लास्ट सर, लैंड एक मेरा साथ छोटा सुझाव है। आप ग्लोबली जा रहे हैं, निवेश लाने के लिए डिफरेंट स्टेट्स भी सारे compete कर रहे हैं, बट जो करंट आपकी इंडस्ट्री है, सिंस इट्स अ हिल स्टेट, लैंड विल ऑलवेज बी स्कैर्स। तो अगर हम ऑलरेडी जो इंडस्ट्री है उत्तराखंड स्टेट के अंदर, उसकी हम पॉलिसी सेफ्टी को ध्यान रखते हुए अगर हम कुछ थोड़ा ग्राउंड कवरेज या FAR को हम बैलेंस कर सके, तो आई थिंक ये जो इन्वेस्टमेंट है, जो ऑलरेडी स्टैब्लिश प्लेयर्स हैं, वो और इन्वेस्टमेंट कर देगी। Last, sir, I would like to say that CII has already enjoyed a very long-standing presence in Uttarakhand state. We are extremely happy and delighted to partner with you in this basically Global Investment Summit of 2023. CII, sir, will always talk about competitiveness, ease of doing business, and sustainability. And I'm extremely confident that under your leadership, this basically state will not only flourish, but also will become a shining example in India to basically provide investment and the right type of sustainable business. So, बहुत बहुत धन्यवाद and all the best. Jai Hind, sir. Thank you very much, sir, especially for sharing your wonderful experience in Uttarakhand. I was expecting actually more round of applauses for this wonderful session. Can we bring in some energy, ladies and gentlemen, please? So before we proceed towards the next session, we have a special display for all of us. So Uttarakhand Global Investors Summit has a special display. We have a logo display. I would like to request, please share your love and your blessings. Can we have the logo on screens? With some round of applause, Where the majestic ladies and gentlemen. Himalayas converge with boundless opportunities, Uttarakhand invites you to embark on an extraordinary journey. With investor-friendly policies, top-notch infrastructure and a serene ambience, we are shaping the future of investment. Uttarakhand isn't just a destination, it's a gateway to prosperity and growth where the world converges. Join us at the Global Investors Summit and be a part of this remarkable journey. Thank you very much. The beginning is so sweet, and if the beginning is this way, we are already halfway. So thank you once again, our media associates, our distinguished personalities from industry for being here and gracing this summit. Thank you. So now please help me to welcome Mr. Kavinder Singh, MD and CEO, Mahindra Holidays and Resorts, India Limited, for sharing his experience in working with Uttarakhand. Can we, round of applauses, can we welcome Mr. Kavinder Singh on stage? All over to you, sir. Destination Uttarakhand. Honorable Chief Minister, all other dignitaries on the dais, I must say that it's an honor and privilege to be standing in front of all of you and sharing our experience in Uttarakhand and to some extent what do we plan to do next in Uttarakhand. As I can see, all roads now lead to Uttarakhand. I must say that the fact that Uttarakhand is Devbhumi and the fact that it has variety of tourist destinations, and whether you look at religious tourism at Haridwar, Char Dham, whether you look at wildlife at Rajaji and Corbett National Park, ski tourism at Oli, adventure tourism at Rishikesh, to name a few. There are several unique destinations as well, like Nag Tibba, known for being the highest peak in the lower Himalayas, famous for its amazing treks, and of course, Binsar, where we are present from 2002.
When I say we, I mean Mahindra Holidays and Resorts India Limited. Uttarakhand is blessed with destinations attracting people of all age groups from across the country. And no wonder the idea of Destination Uttarakhand needs a big round of applause. In the hospitality industry, we are blessed to have a sizable portion of our team members from Uttarakhand, including in our company. Natives of the state have emerged as very highly skilled people in culinary arts and hospitality services for many decades and continue to contribute at various levels in the hospitality industry. In fact, we count on Uttarakhand as a big source state for even our resorts which are outside of Uttarakhand to ensure that we get the right talent. The legendary hospitality of people of Uttarakhand is a huge plus when it comes to our industry. Not only Uttarakhand natives are peaceful, but they also have an amazing sense of hospitality, which is a great plus for our business. As you may know, Mahindra Holidays and Resorts India Limited is India's leading vacation ownership company. We have 143 resorts around the globe, of which 82 are in India. Our company has 286,000 members, and we have in the past created holiday destinations such as Munnar in Kerala, Kumbhalgarh in Rajasthan, and Binsar in Uttarakhand, to name a few. We have been operating Club Mahindra resorts at Corbett, Mussoorie, Kanatal, and we are also present in Binsar, as I mentioned, for almost last 2 decades. Mahindra Holidays is the only hospitality company in the country which has established experiential family vacations and has inspired many in the industry to follow our lead. In the era of nuclear families, we are known for creating destination experiences for intergenerational holidays, where 3 to 4 generation of families holiday together and bond and create memories of a lifetime. That's the business we are in. As a part of our core purpose, we are deeply committed to sustainability, and we aim to achieve carbon neutrality by 2040. We are also India's first hospitality company to join global campaigns like Renewable 100 as well as Energy Productivity 100, again by 2030-2040 respectively. In Uttarakhand, we will build our new resorts and also be champions of net zero in energy, water, and waste. In the process, we aim to become role models for sustainable tourism in the state. I would like to commend the vision of the Uttarakhand government for the tourism industry as it aims to establish new tourist destinations, circuits, and clusters with tourist-friendly infrastructure, including skill development initiatives and enabling world-class tourism experiences in the state. The incentive policy structure and outlays such as subsidy period of almost close to 10 years from the commercial operations date, single body for approvals, Uttarakhand Tourism Development Board, and development norms are truly path-breaking steps. I have not seen this kind of policy. We have been dealing with many states. I think Uttarakhand is the leader in instituting these kind of policies. A round of applause. I would like to congratulate Honorable Chief Minister and his team for launching the Uttarakhand tourism policy. We have been working with MD Sitkul, Mr. Rohit Meena, and other officers for the last few months to evaluate land sites for development of new resorts, and we would like to express our sincere gratitude and thanks for all the cooperation and guidance from the officials of the Uttarakhand government. Considering the proactive support that we have been seeing from the government and which is led by the Honorable Chief Minister, Dynamic Chief Minister, Mr. Pushkar Singh Dhami, the affinity to hospitality of the people of the state, a very robust tourism policy, we will be exchanging an MOU with the government of Uttarakhand to do our biggest investment in any state in the country. Mahindra Holidays will invest 1,000 crores in creating 4 to 5 large resorts in the next few years. We also aim to become a strategic partner of the state and will support the government in all its tourism endeavors, and on its part will create new destinations through development of these large resorts.
once again thanking all of you, Honorable Chief Minister, and once again thanking all the dignitaries of the dais to patiently listening. We believe that Global Investment Summit Curtain Raiser has opened on a great note. It is bound to be a landmark event in December. Wishing the Uttarakhand government and all its officials a grand success for the Global Investment Summit in December. Thank you very much. Well, thank you very much, sir, for sharing your insights and experience. Thank you very much. So after the logo, it's time to know more about Uttarakhand Global Investors Summit. And in order to know about it, I think the website is the best option. So ladies and gentlemen, you all have to help me in order to display the Uttarakhand Global Investors Summit's website on the screen by bringing some energy and putting your hands together. Explore our dedicated website at investuttarakhand.uk.gov.in/Investor Summit to access a wealth of information regarding the summit. It serves you as your all-encompassing guide for every aspect of this event. The registration process for this prestigious event has been meticulously optimized. Our user-friendly portal and highly skilled support team are here to assist you, ensuring a smooth and hassle-free registration experience. Delve into the intricate policy framework meticulously crafted to cater to sector-specific nuances, thereby ensuring your investment voyage remains impeccably smooth. Speaking of sectors, allow us to unveil prime investment prospects in industry, tourism, power, education, Ayush and wellness, healthcare, logistic, agriculture and horticulture and more. All requisite information is at your immediate disposal. With the government of Uttarakhand meticulously furnishing comprehensive statistics and exhaustive information on over 200 investable projects, you are presented with a wealth of options. Reserve a slot in your schedule for sectoral sessions, offering a meticulous minute-by-minute itinerary of the Investors Summit. Participate in a series of nationally and internationally acclaimed events and explore a world of opportunities. For your utmost convenience, we have developed a sophisticated investment tracking tool. This unified platform simplifies the submission, monitoring, and approval of investment proposals. Rest assured, your intentions are vigilantly overseen by the highest echelons of the government. Let us forge a collective path towards a prosperous future at the Uttarakhand Global Investors Summit 2023. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you. What a wonderful beginning of Uttarakhand Global Investor Summit 2023. And this is just a curtain raiser. Well, coming back to the next session, ladies and gentlemen, please help me to welcome on dais. He will share his experience at the same time. He will talk about Uttarakhand Global Investor Summit. Please help me to welcome Mr. Vadiraj Kulkarni, CEO, Paper and Pulp ITC Limited. Round of applause, ladies and gentlemen. Good afternoon, everyone. Respected Chief Minister, sir, Chief Secretary, Dr. Sandhu, Radhaji, all the dignitaries on the dais and off the dais. I represent the ITC group, and you must be familiar with ITC group, which has got diversified interests in cigarettes, FMCG, hotels, agribusiness, paper, pulp, and infotech. So our journey with Uttarakhand started way back in 2007 when the incentive policy was announced. And over a period of time, starting with the first factory for the ITC FMCG, other FMCG businesses, we have invested almost 1,300 crores in the state across our Haridwar complex. We also have 9 hotels in the state. We support livelihood of more than 2.5 lakh people. And in our Haridwar complex, which is 1 Sitkul Haridwar is the address of the place, we have more than 2,500 employment in terms of direct and indirect employment. From what I hear from my colleagues who work from these businesses,
I think it has been a very peaceful experience, very supportive. The government has been very supportive in terms of expansions, dealing with issues, etc. While it is known as a hill state, and as common people, we are very enchanted with tourism potential and when we visit various sites there. But I think the way the state governments over a period of time have taken initiative to encourage investment in manufacturing, it has been fantastic. In fact, my own business, when it acquired, ITC acquired Vimco seedlings, has doing massive research and development in clonal plantations of poplar and eucalyptus, and today works with a lot of farmers based out of Rudrapur. We have, around 5 hotels in the state, and we also planning to set up 4 more hotels in the next few years. That's what's happening. In terms of agribusiness, you must have heard about e-chopals, which are one of its kind in terms of pioneering effort to connect farmers in terms of inputs as well as market linkages. And we have 100 e-chopals in the state of Uttarakhand across 500 villages, benefiting over 10,000 farmers. And we believe that many of these initiatives working with farmers across horticulture and wheat will help us the state's farmers to increase their incomes over a period of time. We also have massive programs for holistic development of the state through CSR, that is called ITC Mission Sunera Kal. I won't get into details because all these details are available on the site. Now, coming to our own interest of potential expansion and investment in the state, we've been working with the state government, SIDCUL in specific, almost for last 9 months. And as Dr. Sandhuji said, that a lot of states in the last 10-15 years have been really competing to attract investments through various measures in terms of infrastructure, in terms of incentives, in terms of very industry-friendly kind of business, right? And today ITC operates its own factories across 15 states in India, right? Across Ganges, across Godavari, across Kaveri, and now across Mahanadi. So variety of kind of businesses and factories are being set up. And ITC is obviously scaling up massive investments across various places. I wouldn't say that where we are today, it's bad, but my personal experience with working with SIDCUL has been very, very welcoming. In fact, while obviously they will, when industries are invited, there is a lot of support from the government, and once the industry is set up, people typically think, state governments now have washed off their hands and, now they let the industries manage on their own. And I think that's not been our experience in the state, so I must, give credit to the administrative services, various departments of the state. In specific, I must say that when we're working with Mr. Minaji and Dr. Meenakshi Sundaram, I was very surprised when they said, we will come and meet you at your office. Normally, when we have to meet, senior politicians, leaders, and IAS officers, we have to go seek appointment, wait, and knock the door and all that. So when we went to Dehradun, we were like really, it was a red carpet welcome in terms of how they showed us various possibilities in the state. Even when we went to one of the sites that they're wanting us to look at, the entire local administration was with us. And they could share every information, every bit of information that we wanted. And as rightly so, if these investments, there is a lot of due diligence studies required. And we at ITC obviously will, we are a professionally managed organization per se. So, and hence we need to do a lot of diligence because our investors will seek, why are you investing so much so in this state, etc. It's been a very welcoming kind of approach. And I know there are a lot of challenges for these kind of investments, and departments have been very, very supportive, and I hope that very soon we will, be able to rectify some of this if our senior management and board approves this. And with that, I would say, wishing all the best to Destination Uttarakhand and the Global Investor Summit. And we are happy to be partnering with, the state government so far, and hopefully in the future too. Thank you, and thanks for inviting me. Well, thank you very much, sir, for sharing your experience and insights. Thank you. So after the logo and website, it's time for the screening of the state film. Ladies and gentlemen, you all have to, help me to welcome the screening of the film. Everybody can be bringing some energy by putting hands together. Can we have the screening? Welcome to Devabhoomi, Uttarakhand, the picturesque Himalayan state of India, with the tranquil temples, the mighty Ganga, breathtaking Himalayan peaks, and exhilarating adventures beckon you to explore its wonders. Uttarakhand has not only embraced its beauty, but
has also emerged as an economic powerhouse in the country. Uttarakhand's connectivity, with its well-connected rail, road and air infrastructure, positions it as a strategic gem in the heart of India. Situated in close proximity to the national capital region, this state offers businesses an unparalleled advantage, ensuring easy access to major transportation hubs. Uttarakhand embodies the essence of peace to prosperity. The peace of doing business here is exemplified by a state-of-the-art single-window portal offering over 200 services which attract investments across various industries like tourism. Uttarakhand's natural beauty and varied topography allows it to be an appealing destination for hotels and tourism-related projects. Ayush and wellness. Top-ranked wellness resorts like Ananda and Vana are the flag bearers to Uttarakhand's efforts in growing the health and wellness industry. Pharma. Uttarakhand boasts of over 300 pharmaceutical units, catering to 22% of India's generic drugs manufacturing. Health. Most of the biggest healthcare players like Max, AIIMS, Fortis, Medicity and Graphic Era have a presence in Uttarakhand. Education. The state has many renowned elite K-12 residential schools. There are more than 13 government and 21 private universities thriving in the state. Food processing. Home to 4 agro-climatic zones, Uttarakhand offers a rich bounty of crops, vegetables and fruits round the year. Automobile. The major hub for auto components and OEMs, Uttarakhand is responsible for more than 10% of India's auto components manufacturing. Electronics. The state also has a highly evolved ecosystem for the electronics, EMS and OEM industry. Notably, 6 top-rated industrial parks of Uttarakhand have ranked in the top category in Government of India's Industrial Park Rating System. With an unwavering focus on giving impetus to businesses, the Uttarakhand government has streamlined the investment processes by reducing more than 2,000 compliances, becoming an achiever in DPIIT's Ease of Doing Business ranking. Currently, there are more than 30 investor-friendly tailor-made policies like tourism policy. Under the tourism policy, businesses are allowed up to 50% capex subsidy without a cap for hospitality projects and up to 100% capex subsidy without a cap for tourism products. MSME policy. Businesses qualifying as MSMEs get a capex subsidy of up to rupees 4 crore. Mega policy. For projects where investment is between rupees 75 crore to rupees 200 crore, get a power assistance up to rupees 1.5 crore per year for 5 years. Logistics policy. Businesses are subsidized 20% of the project cost up to rupees 32 crore. Service sector policy. To boost service-related businesses in the state, companies are allowed allotment of government land at circle rate or capex subsidy up to 20%. As a result of its relentless pursuit of growth and development, Uttarakhand has seen a double-digit jump in employment rates in the last 2 decades. Currently, the state has the lowest industrial tariffs for electricity in India and also boasts of the lowest man days lost due to industrial strife in the state. Armed with 6,000 acres of government-owned land and attractive investable projects, Uttarakhand is becoming the go-to state for opportunity and progress. As a precursor to Uttarakhand Investors Global Summit 2023, the state is organizing international and domestic roadshows, where we are proud to showcase our comprehensive manufacturing ecosystem, world-class infrastructure, and the inimitable Indian hospitality that can help businesses flourish. Come to Uttarakhand. Let's build together. Well, what a detailed, at the same time informative state film. So now, I think we are not over the film. Can we have one more round of applause? It was such a beautiful state film. Thank you. Now, please help me to welcome Mr. Vipin Gupta, Chairman, CII Uttarakhand and Director GB Springs Private Limited, to share his insights and experience
with Uttarakhand government. Round of applause, ladies and gentlemen. Good afternoon, everyone. Shri Pushkar Singh Dhami ji, Honorable Chief Minister, Mrs. Radha Ruturi, Dr. Sandhu, my colleague Deepak Jain, and all other dignitaries on the stage. Ladies and gentlemen, we are proud to have been in the Uttarakhand since the state's inception, and we have had the privilege of working very closely with the state government on various initiatives. When the state was formed, we worked very closely with the state government through CII, Government of Uttarakhand Joint Task Force in the areas of policy making and attracting investments. We were very active proponents of the planned industrial development approach, and the state government took, and it has led to the creation of world-class integrated industrial estates in the state, which we are really proud of. The task of promoting industry in Uttarakhand, which had virtually zero industrial base, which was indeed very challenging, but together, working in partnership mode, the state did extremely well and has made a mark on the industrial map of India. Government is visioning to double the state's GDP in the upcoming 5 years through a 15% growth rate every year. To realize the vision plan and doubling the state GDP in the next 5 years, we need to work towards further strengthening the competitiveness of the state, and at this important juncture, we would like to offer all of our support in ensuring the economy of the state continues to flourish. CII had the privilege of working very closely with the state government as a national partner for Uttarakhand Investor Summit in 18, and this year too. We are exclusive national partners for the state Uttarakhand Global Summit. Let me assure you, sir, government, CII will provide full support to this important initiative and attracting investment in the state. Now, before I close this note of mine, sir, I just would like to share a little experience of mine in the state of Uttarakhand. So we are present in the state since 1985. We are the first industrial unit in the state of Uttarakhand. Sorry, I mean to say Dehradun, probably. In 1985, we are the first engineering unit which is manufacturing railway components, and it is the most precision and it's a safety item basically. And we are into shock absorbers, and we are probably one of the two industries in the country, two factories in the country who are making those kind of springs which go to railway application, specifically for the passenger coaches and electric locomotives. The second one happens to be in Kanpur. So now coming to shock absorbers, we are again one of those companies among the 4 companies in the country who make shock absorbers, like Gabriel, Escorts, Norbremse, which is a German company, and GB. So we did partner with a company from China, and we developed and supply air springs for the Indian Railways. Having started in 85 with a small capex of about 2 CR, in 85 with a small capex of 2 CR, sir, we are today sitting at 500 CR. And looking to our further vision in terms of the kind of Honorable CM साहब का जो positive approach है, दीपक साहब ने भी बोला 1-to-1 2 हफ्ते पहले मीटिंग हुई साहब के साथ, और the kind of positive attitude and the approach and the proactive thing. So we probably, we are now partnering with a company in Europe, which is probably $10 billion group, and they have 35 plants globally. And they also compete with us in springs in a plant in Europe, which is based in Poland. So we are partnering with them, and we have already gone ahead to discuss for the land issues allotment with Rohit Meena sahab, and we are planning to invest about 300 CR there. And recently we have already diversified. And we have already started the new unit, which is a world-class unit for the medical devices in Dehradun. We have invested about 100 CR there. So that is the kind of diversification we have done from the engineering and to the medical. So I mean to say, since 85 till today, no labor issues. I am sure, actually, we're talking of today, I'm talking of 85.
हमने उन दिनों में फैक्ट्री लगाई सर देहरादून में जब पानी के बरसातों में नाले होते थे पानी के, एंड वी कुड नेवर रीच द फैक्ट्री फॉर डेज टुगेदर. So we had to ultimately request the government for the wireless system allotment, and we had something in the factory and residence and garme. So we worked in those kind of difficult, but the government was so proactive, so it probably progressed. So I wish all the best, sir, and we are all with you, and we look forward that this summit would definitely put our state on the global platform, and we are sure we'll do very good, sir. Thank you very much, sir. Thank you. Well, thank you very much, sir. Can we bring in some energy? Round of applause for sir. A wonderful session. Thank you very much. So now, before we proceed towards, of course, the most awaited session addressed by our Chief Minister, sir, we have a special announcement, ladies and gentlemen. There will be a MOU exchange between Mahindra Holidays Resort India Limited and Uttarakhand government. Ladies and gentlemen, this is a historical moment. I would request each one of you share your love and your blessings in the form of clapping. I would like to request Mr. Sachin Kurve, Secretary Tourism, sir, please come ahead, and Mr. Kavinder Singh, MD and CEO Mahindra Holidays and Resorts India Limited, for the MOU exchange. This is an auspicious moment for all of us. Everybody, please appreciate the moment by putting your hands together. Thank you very much. Let me tell you, as sir mentioned, 1,500 plus employment gonna generate in Uttarakhand, and more than 1,000 crore investment, and 4-5 upcoming 5-star resorts in Uttarakhand. So heartiest congratulations. And now I would like to request our Honorable Chief Minister Shri Pushkar Singh Dhami ji for the offer letter. And I would like to request CEO ITC, Mr. Vadi Raj Kulkarni, sir, please come ahead for the offer letter. This is again an auspicious moment for all of us, ladies and gentlemen. Offer letter, our CM, sir, providing to CEO of ITC. Thank you very much. So finally the moment is here. I would like to request आप अपनी तालियों के साथ ये जाहिर करें कि हमारे दिल में कितनी इज्जत, कितनी आशीर्वाद और कितना प्यार है हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए. जोरदार तालियों के साथ for everybody for few words. I would like to request Shri Pushkar Singh Dhami ji, Honorable Chief Minister Uttarakhand, on dais. Round of applause, ladies and gentlemen. उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कर्टन रेजर आज के इस कार्यक्रम में मंच पर यहाँ पर उपस्थित हमारे राज्य के मुख्य सचिव श्री डॉक्टर एस संधू जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्रीमती राधा रतूड़ी जी, श्री आनंद वर्धन जी, और CII नॉर्दर्न रीजन के चेयरमैन और उत्तराखंड में जिनका एक बड़ा निवेश पहले से ही है, आप सभी को उन्होंने बताया भी यहाँ से के चेयरमैन और उत्तराखंड में जिनका एक बड़ा निवेश पहले से ही है, आप सभी को उन्होंने बताया भी यहाँ से Please come ahead for the offer letter. This is again an auspicious moment for all of us, ladies and gentlemen.
Offer letter, our CM sir, providing to CEO of ITC. Thank you very much. उससे ज़्यादा उम्मीद है कि जितनी हमारी उम्मीद है उससे ज़्यादा सब लोग कर रहे हैं, तो उनका भी एक बड़ी उम्मीद के साथ हमको इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड के लिए आएगा। यहाँ पर आए हुए हमारे सभी अधिकारीगण, सभी हमारे अतिथिगण, विभिन्न समूहों से आए हुए हमारे सभी लीडर्स और सभी मेरे, मैं कहूँ कि सभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार मित्र जो समूह भी चलाते हैं और जिन्होंने पत्रकारिता से अपने जीवन को शुरू किया है, सभी आए हुए समूह के हमारे प्रतिनिधिगण, मैं सबसे पहले तो आप लोगों ने जिस धैर्य से लगातार, मैं देख रहा हूँ कि 11 बजे लगभग सब आ गए थे और तब से लेकर जितने लोग शुरुआत में थे उतने ही लोग समापन तक हैं क्योंकि अब समापन होने ही वाला है। तो मैं आप सबकी जो धैर्य शक्ति है उसको भी प्रणाम करता हूं और उत्तराखंड राज्य के मुख्य सेवक होने के नाते आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में बहुत अपनी तरफ से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और सचमुच आज हिंदी दिवस भी है, हिंदी दिवस की भी मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। उत्तराखंड देश का मुकुट है और धामों की भी पुण्य भूमि है और मैं उत्तराखंड का मुख्य सेवक धामी। पीस से प्रोस्पेरिटी, इसका आज का जो हमारा लोगो है ये है पीस से प्रोस्पेरिटी। वास्तव में यह पीस और साथ में प्रोस्पेरिटी हो, खुशहाली हो, तो आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं, जिसका कोई शब्दों में जिसका व्याख्यान नहीं किया जा सकता है वह है। और पहला दिन जिस प्रकार से आज शुरुआत हुई है, निश्चित रूप से हम लोगों के लिए बड़ा उत्साहवर्धक है। और मैं आपको बताऊं कि जब से हमने ये शुरू किया और हमारे पूरी टीम ने ये विचार किया कि हम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करेंगे, उस दिन से कोई भी ऐसा दिन नहीं है जिस दिन हमको उत्साहजनक तरीके से लोगों ने प्रोत्साहित करने का काम नहीं किया। लगातार हमको प्रोत्साहित किया है। मैं उन सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं जिन लोगों ने पहले दिन से हमारी शुरुआत की, हमको आगे प्रोत्साहित करने का काम किया और भरोसा दिया कि नहीं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जहां उत्तराखंड राज्य के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, वहीं देश के लिए भी एक बड़ा योगदान होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो देश की जो अर्थव्यवस्था है, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का जो लक्ष्य लिया गया है, उसमें यह एक गिलहरी की तरह एक योगदान होगा। हमारा राज्य, चूँकि हम हमेशा देश के साथ चलने वाले राज्यों में हमारा वो रहा है, चाहे देश की सीमाओं की रक्षा करनी हो या देश को जवानी देनी हो या देश को पानी देना हो, दोनों में उत्तराखंड राज्य का बहुत बड़ा योगदान है। आज देश के किसी भी कोने पर, देश की सीमाओं पर उत्तराखंड का जवान देश की सीमाओं की रक्षा कर रहा है। सेना में हो या पैरामिलिट्री में हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में देश के वो अपनी सेवाएं दे रहा है। उसी प्रकार से जिसके बारे में डॉक्टर संधू साहब ने पहले बोला कि हमारे पास गंगा, यमुना, सरयू, शारदा, महाकाली, ऐसी अनेकों जो नदियां हैं, 12 मास जो लगातार प्रभाववान रहती हैं, वो कहीं ना कहीं संपूर्ण भारतवर्ष को और मैं कहूँगा कि संपूर्ण पर्यावरण को हर प्रकार से पानी देने का भी काम करती हैं। तो इसमें बड़ा योगदान उत्तराखंड का है और इसलिए हमने ये तय किया है कि इस आर्थिक विकास में भी
अपनी सहभागिता निभानी है। हमारा लक्ष्य है कि उत्तराखंड राज्य जो उसकी प्राकृतिक विरासत है उसको अक्षुण्ण रखते हुए राष्ट्र में सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, सबसे तेज़ी से जो राज्य विकास की ओर बढ़ रहे हैं, उन राज्यों में उत्तराखंड का भी स्थान हो, उत्तराखंड भी उन राज्यों में आए, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और उत्तराखंड में देखिए काम करना अपने आप में मैं कहूँगा कि वहाँ जन्म लेना तो प्रभु की इच्छा है कि जन्म लिया, और जन्म अगर नहीं भी लिया किसी ने, अगर वो वहाँ कर्म करेगा किसी भी रूप में, तो उसके ऊपर भी ये मानिए कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा होगी, इसीलिए उसको जो है वहाँ पर कर्म करने का अवसर मिलेगा। और ये बिल्कुल आप लोग जितने लोग भी आज मुझे सुन रहे हैं या जितने लोग भी इस कार्यक्रम में आए हैं, हम लोग जो कार्य करने जा रहे हैं वो राष्ट्र के लिए है, राज्य के लिए है, जन जन के लिए है, और उसमें आपकी सहभागिता देवभूमि के लिए है। तो ये तय मानिए कि आपके ऊपर देवों की कृपा है, इसीलिए आप भी यहाँ पर हैं। हर प्रकार से देवों की कृपा आपके ऊपर है, और आपको भी कहीं ना कहीं उत्तराखंड राज्य के लिए कुछ योगदान देने का अवसर मिल रहा है। और उत्तराखंड देवभूमि है, हम सभी लोग भली भांति जानते हैं। यहाँ गंगा, यमुना, अनेकों जो नदियाँ हमारे यहाँ से निकलती हैं, चारों धाम हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ आदि कैलाश से लेकर पूरा मानस खंड है, और उस मानस खंड को भी निकट भविष्य में हम बहुत तेज़ी से एक सर्किट बनाकर मानस खंड मंदिर माला मिशन वो हमने अपना लक्ष्य लिया है। उसके अंतर्गत जैसे आज चार धाम हैं, उसी प्रकार से चार धाम की तरह कुमाऊं क्षेत्र के जो हमारे पुराने धार्मिक स्थल हैं, पौराणिक स्थल हैं, उन सभी को एक सर्किट के तहत उन सब का निर्माण, पुनर्निर्माण, उनका विस्तार करने का भी हमने संकल्प लिया है। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ यह राज्य पर्वतों से आच्छादित है, पर्वतमालाएं हैं, और हमारा 71%, संधू साहब ने बहुत विस्तार से उसको नहीं बताया क्योंकि वो टाइम देख रहे थे, वहाँ पर मैं देख रहा था, तो वो कह रहे थे कि नॉन पॉल्यूटेड रीजन ऑफ एनसीआर उत्तराखंड को। तो आप ये सोच सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में उत्तराखंड जैसा दूसरा राज्य, मैं नहीं कह रहा हूँ कि वैसे तो पूरा भारत देवभूमि है, शास्त्रों में और हमारे धार्मिक ग्रंथों में सभी में कहा गया, पूरी जो भारत भूमि है वही देवभूमि है। लेकिन उत्तराखंड विशेष रूप से जिस प्रकार का है, नदियों से आच्छादित, वनों से 71% हमारा जो भूभाग है वो वनों से आच्छादित है, 71%। तो आप सोच सकते हैं कि वहाँ व्यक्ति अगर इन्वेस्टमेंट करेगा, वहाँ किसी काम को करेगा या हेल्थ वेलनेस के लिए भी आएगा, तो अपने आप में उसको वैसे ही नैसर्गिक रूप से, प्राकृतिक रूप से अनेकों प्रकार की ऊर्जाएं प्राप्त हो जाएंगी। वो एक तरह से ऊर्जा का स्रोत है। वो ऋषियों की भूमि है, मुनियों की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है। और पहले के समय में जो हम आज सनातन की बात करते हैं, तो उस समय में इतने सारे यज्ञ, इतने सारे मंत्र उस भूमि पर हुए हैं, और मंत्र और शब्द ये कभी समाप्त नहीं होते हैं, ये हमेशा विचरण करते रहते हैं, और उसकी शक्ति हमेशा बनी रहती है। नेगी जी, आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं आज मुझे। तो ये शब्दों की जो ताकत है वह भी हमारे यहाँ के जो वायुमंडल है, उस वायुमंडल में है। तो मैं इसलिए आप सबसे निवेदन करूंगा, सबसे अनुरोध करूंगा कि आप सब लोग इसमें अपना योगदान दें। और ये इन्वेस्टर समिट करने से पहले हमने कुछ लक्ष्य लिए थे। एक तो लक्ष्य था कि हमारा कि हम उत्तराखंड की जो जीडीपी है उसको अगले 5 सालों में दुगना करेंगे। उस दिशा में हमारे प्रयास चल रहे हैं, और ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी उसी का एक पार्ट है। ये हमारे लिए, राज्य के लिए भी एक अवसर भी है
कि इस अवसर को हम लोग ठीक प्रकार से ठीक कर पाएँ, ठीक अवसर का पूरी तरह से लाभ ले पाएँ, उपयोग कर पाएँ। और इस आयोजन से पहले जैसा हमारे मुख्य सचिव संधू साहब ने कहा कि आप उत्तराखंड में उद्योग क्यों लगाएं, उत्तराखंड में आप इन्वेस्ट क्यों करें, आपको वहाँ पर लैंड अच्छी मिलेगी, लैंड आसानी से मिल जाएगी। दूसरा, इसके साथ साथ जो कारखाना प्रबंधक और मजदूरों के बीच में, कार्मिकों के बीच में जिस प्रकार की संघर्ष की स्थिति आज अनेकों स्थानों पर पैदा होती है, वो स्थिति उत्तराखंड के अंदर शून्य मात्र की है। और सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी हमने, मातृशक्ति के सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी, ये उनकी सुरक्षा भी और उनका सशक्तिकरण, ये हमने अपनी प्राथमिकता में लिया है। और इसको करने से पहले हमने अभी लगातार जो हमारी पॉलिसी है, उस पॉलिसी में लगातार हमने परिवर्तन किया है और 30 तक लगभग हम 30 तक पहुंच गए होंगे संधू साहब, जो हम नई पॉलिसी जो बना रहे हैं, लगभग 30 के लगभग अभी हमने नई पॉलिसी भी जो है इसमें कहीं ना कहीं प्रख्यापित की है। उसमें प्रमुख रूप से जो टूरिज्म पॉलिसी है, जिसके बारे में अभी कविंदर जी ने बहुत कम शब्दों में, और मैं कहूँगा तो शायद उतना उसका इफेक्ट ना हो जितना इन्होंने बहुत कम शब्दों में कहकर आप लोगों के सामने बात करी। मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं आप सब लोग। और एमएसएमई पॉलिसी है हमारी, स्टार्टअप पॉलिसी है, लॉजिस्टिक पॉलिसी है, और जो निजी औद्योगिक संस्थान की स्थापना के लिए भी हमने नई नीति, इन सभी को इसमें शामिल किया है। इसके अलावा जो पहले से हमारे यहाँ पर बहुत सारे, हमारे यहाँ पर पहले से भी काफ़ी सारे औद्योगिक समूह जो पहले से काम कर रहे हैं, उनकी सुविधा के लिए, उनके अंदर के जो उनका कैंपस है, उस कैंपस के एरिया को भी विस्तार करने के लिए हमने जितना मैक्सिमम उनको दिया जा सकता था, जितना सेफ्टी पर्पस से जो जरूरी है, उसके अलावा उसमें भी हमने संशोधन किया है। और समय समय पर जो आप सबके द्वारा, उद्योग समूह के द्वारा जो हमको जो भी जिस प्रकार की भी हमको अपने सुझाव दिए गए हैं, उन सभी सुझावों पर हम काम कर रहे हैं और बहुत दिल खोलकर काम कर रहे हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारी टीम संधू साहब के नेतृत्व में जिन्होंने ये काम किया है, 6000 एकड़ का लैंड बैंक जो बनाया है, ये लैंड बैंक भी हमको लगता है कि कम पड़ने वाला है, हमें और ढूंढना पड़ेगा। जिस प्रकार से हमको जो हमने एक लक्ष्य रखा था, एक टारगेट हमने रखा था कि हम 25,000 करोड़ की ग्राउंडिंग करेंगे इस प्रोग्राम के समारोह से पहले, लेकिन जिस प्रकार से हमको मिला है, हम 25,000 करोड़ तो अभी पहुंचने ही वाले हैं और इससे ज़्यादा भी हो जाएंगे। मुझे लगता है कि इसके जस्ट डबल के आसपास हम ग्राउंडिंग पर पहुंचेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों ने उत्तराखंड आने की जो है अपनी इच्छा व्यक्त की है। हमारा प्रयास है कि हम अपने राज्य में जो नए निवेशक जो हैं, उनके साथ साथ जो पहले से भी जिनके उद्योग हमारे यहाँ पर लगे हुए, जिनके निवेश पहले से हैं, जिनके उद्योग पहले से स्थापित हैं, उनको भी विस्तार के लिए और अपने एक्सपेंशन के लिए उनको भी प्रोत्साहित करें। उस क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं और बहुत विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सब लोग, अधिकांश लोग दिल्ली के हैं या इसके आसपास के हैं, तो उत्तराखंड आप लोगों से कोई दूर नहीं है, पास ही है। यहाँ से जितनी देर में मैं समझता हूँ एक कोने से एनसीआर के दूसरे कोने में आप नहीं पहुंचेंगे, उससे पहले आप देहरादून पहुंच जाएंगे या हरिद्वार पहुंच जाएंगे या ऋषिकेश पहुंच जाएंगे। तो बहुत आसानी है एकदम से, और आने वाले टाइम में ये दूरी और बहुत कम होने वाली है। मतलब दूरी तो उतनी रहेगी, समय बहुत कम होने वाला है, समय कम होने वाला है। ये समय कुल 2 घंटे का होने वाला है
और रेल के क्षेत्र में भी तेजी से काम हो रहा है। हम वहाँ तक आप 4 धाम यात्रा करने जाएंगे तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग जो रेल लाइन है उसका काम भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में बहुत तेजी से काम हो रहा है। जिस प्रकार से आज हमारे चारों धामों का विकास हो रहा है, ऑल वेदर रोडें बन गई हैं। आने वाले समय में आपकी जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा है, जहाँ पर अभी हमारे कविंदर सिंह जी ने अपना इस्टेब्लिशमेंट वहाँ भी बढ़ाने का इन्होंने अभी हमसे बात की है, टनकपुर से आगे जहाँ माँ पूर्णागिरी का धाम है, और उस रास्ते पर ही वही रास्ता आगे चलकर कैलाश मानसरोवर तक का रास्ता बनेगा। चंपावत, लोहाघाट, पिथौरागढ़ होते हुए हमारा धारचूला से आगे को। और अब वो दिन दूर नहीं है। जिस प्रकार से आज सरकार रोडों को लेकर गंभीर है, आने वाले समय में 4 धाम की तर्ज पर ही वहाँ का भी जो है सड़कों का जब निर्माण हो जाएगा तो सड़क मार्ग से वहाँ हम लोग जा पाएंगे। तेजी से उस पर भी काम चल रहा है। आप सब देख ही रहे हैं कि केदारनाथ जी का 2013 में जब आपदा आ गई थी, आपदा के बाद जिस प्रकार से वहां पर क्षति हुई थी, आज नया केदार बन गया है। भव्य केदार और दिव्य केदार आप इस साल जाएंगे तो भी आपको दिखेगा, और अगले साल आप यात्रा करेंगे तो आपको बिल्कुल ही नए दर्शन होंगे सब सारा का सारा। क्योंकि हमारा जो निर्माण का कार्य चल रहा है वो निर्माण का कार्य इस वर्ष पूरा हो जाएगा, और कुछ ही सालों में जो पैदल यात्रा केदारनाथ की होती है वह भी यात्रा भी आपकी रोपवे के माध्यम से बहुत आसान हो जाएगी। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन में, उनकी लीडरशिप में वहां पर रोपवे का भी शिलान्यास हो गया है। हेमकुंड साहब जाना बहुत कठिन होता था, और हेमकुंड जाने के लिए भी आने वाले टाइम में आपको अब वो 3-4 दिनों की जो कठिन यात्रा थी वो यात्रा भी कुछ ही घंटों में पूरी हो जाएगी। तो ये सारे के सारे काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमने भी उत्तराखंड सरकार की तरफ से भी, जैसे हमने 2 नए शहर बनाने का भी हम लोगों ने लक्ष्य लिया है, संकल्प लिया है, और 2 नए शहर हम मैदानी क्षेत्र में जो बना रहे हैं, बना ही रहे हैं। जैसे अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर का काम तेजी से चलने वाला है। इसके अलावा उसी के आसपास, खुरपिया फॉर्म के आसपास हमने जमीन खोज लिए। 1000 एकड़ से भी ज्यादा लैंड है उसमें। महुआ जो भारत सरकार की योजना है उसमें भी हमको धनराशि देने का यहाँ से एक तरह से सैद्धांतिक रूप से सहमति हमको प्राप्त हुई है। लेकिन उसके अलावा पर्वतीय क्षेत्र में भी हम 2 शहर अलग से बना रहे हैं। ये 2 मंडल है हमारे यहाँ, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल, दोनों ही मंडलों में एक नया शहर बनाने का भी हम लोगों ने संकल्प लिया है। ऐसे अनेकों कार्यों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हरिद्वार और ऋषिकेश जो विश्व प्रसिद्ध हमारे धाम है, गंगा जी के तट पर हैं, तो जहाँ ऋषिकेश और हरिद्वार में गंगा कॉरिडोर बनाने का भी हमने लक्ष्य लिया है। और ये लक्ष्य हमने टाइम बाउंड किया है कि हम 2026 तक इसको पूरा करेंगे। जैसे गंगा जी पर हरिद्वार बसा है, ऋषिकेश बसा है, बड़े स्थान हैं, बड़े शहर हैं, उसी प्रकार से एक समय में महाभारत काल के समय में यमुना जी में हरिपुर धाम हुआ करता था। और ये कालसी के पास विकासनगर से थोड़ा आगे उस स्थान पर हमने हरिपुर धाम बनाने का भी संकल्प लिया है। और इस बार जन्माष्टमी के दिवस पर हमने उसका शिलान्यास कर दिया है। आने वाले समय में आपको यमुना जी के तट पर भी ये एक पूजा स्थल जहाँ पर तुलिंग जी पूजा हुआ करेगी और आरती होगी, वो शुरू हमने करवा दी है। तो ऐसे नए नए स्थानों को हम कर रहे हैं। और इसी प्रकार से टनकपुर में महाकाली जी आती हैं ऊपर से, वहां हमने राफ्टिंग का काम शुरू किया है। इस बार राफ्टिंग शुरू हुई है, अभी नेशनल राफ्टिंग भी वहां होने वाली है। और नेशनल राफ्टिंग के साथ साथ शारदा जी में शारदा आरती भी हमने प्रारंभ की है। और आपको मैं बताऊं कि जहां 4 धामों में हमारे हर वर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, पर्यटक आते हैं, इस वर्ष अभी तक हमारे लगभग 40 लाख की संख्या क्रॉस होने वाली है। जबकि पिछले 2-2.5 महीने 3 महीने आपने देखा है हम किन स्थितियों से गुजरे हैं। हमको हर साल बड़ी कठिन परिस्थितियों में भी
हमारे पूरे हिमालय के क्षेत्र में आपदा का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा किया है। हालांकि हमसे ज़्यादा हिमाचल में हुआ है, हमारे यहाँ भी काफ़ी नुकसान हुआ है पूरे हिमालय रीजन पर। तो आने वाले समय में हमने ये तय किया है कि हमारे सभी स्थानों पर हम नवाचार करेंगे, नवाचार को बढ़ावा देंगे, लोगों को आकर्षित करेंगे, उनको सुविधाएं देंगे, अतिथि देवो भव की तर्ज पर इन सभी कामों को आगे बढ़ाएंगे। और अभी पिछले दिनों हमारे यहाँ पर जो उत्तराखंड के अंदर कुछ काम हुए हैं लॉजिस्टिक को मजबूत करने और व्यापार को आसान बनाने के लिए। अनेक प्रकार की जो बुनियादी ढांचा परियोजना है वो भी हमने शुरू की है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए स्टेट ऑफ आर्ट के रूप में आईसीडी व एलसीएस की स्थापना की है। राज्य में जो हमारा नोडल विभाग है सिक्कुल, जो इन सभी कामों को नोडल एजेंसी के रूप में आगे बढ़ा रहा है, उसमें भी लगातार हम नवाचार कर रहे हैं। अत्याधुनिक औद्योगिक जो स्थान है, वो क्षेत्र हैं, नए एरिया हैं, उन सभी को नोटिफाइड भी कर रहे हैं। काशीपुर आप सब जानते हैं, वहां पर अरोमा पार्क हमारा बन गया है। सितारगंज में प्लास्टिक पार्क है, बड़ा सिटकुल है। काशीपुर में एक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है वो बहुत जल्दी हम उसको भी धरातल पर उतारने वाले हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूं कि उत्तराखंड राज्य ने जो हमारे राज्य में उत्पादित 9 उत्पाद हैं जिनमें जीआई टैग जिनको हासिल हुआ है, उन जीआई टैगों में, चूंकि आप लोगों को नया नाम लगेगा, लेकिन मैं सोचता हूं कि मेरे लिए भी इससे अच्छा स्थान और कौन सा हो सकता है जहां में राज्य के अंदर होने वाले ऐसे उत्पाद जो पौष्टिक रूप से, हर प्रकार से, हर दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन सबको आपके सामने जरूर बताऊं। कुमाऊं में एक चूरा ऑयल होता है, उसको जीआई टैग में स्थान मिला है। मुंशियारी क्षेत्र जो कि हिमाच्छादित क्षेत्र है, उस क्षेत्र का राजमा है। भोटिया दन, एपड़ है, रिंगाल है, ताम्र उत्पाद है, थुलमा है, तेज पत्ता है तथा बासमती चावल है। और इसके साथ साथ राज्य सरकार द्वारा नेटल बिच्छू घास, आप लोग सोच रहे होंगे बिच्छू घास क्या होता है, बताइए। चुपती है। हाँ, सब्जी भी बढ़िया बनती है। वाह, चलिए बहुत बढ़िया है। तो बिच्छू घास का पिछोड़ा, आर्टिस्टिक कैंडल, मुखौटा एवं मंदिर प्रतिकृति आदि कुछ और भी उत्पाद हमने जीआई टैग के लिए, उसके लिए भी अनुरोध किया है, वहां निवेदन किया हुआ है। और उद्योग जो नीति आयोग द्वारा 2022 की जो तैयारी सूचकांक है, उस तैयारी सूचकांक में भी राज्य जो हमारा है, हिमालयी राज्यों में हमको पहला स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि उस हिमालयी राज्यों में तो पहले स्थान पर और पूरे देश में भी 9वें स्थान पर हमारा राज्य आया है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक विभाग की जो लीड्स रैंकिंग है, उसमें हम 2022 की रैंकिंग में उत्तराखंड राज्य अचीवर्स की श्रेणी में शामिल हुआ है। इसी प्रकार स्टार्टअप रैंकिंग में भी हम लीडर की श्रेणी में शामिल हैं। तो ऐसे अनेकों कार्यों को करने के लिए, राज्य में निवेश एवं इसको प्रोत्साहन देने के लिए हमारे उद्योग निदेशालय के द्वारा एक समर्पित, अभी मैं कुछ सुझाव भी यहाँ से आ रहे थे आप सब लोगों के, श्री जैन जी का, दीपक जी का और अन्य लोगों के जो सुझाव आए थे, उसमें एक इन्वेस्टर फैसिलिटेशन सेल की स्थापना की है, जो निवेशकों और जो भी हमारे यहाँ पर काम करने के इच्छुक लोग होंगे उनके लिए वन स्टॉप शॉप के रूप में डेडिकेटेड हैंड होल्डिंग सपोर्ट, जो भी 5 करोड़ से अधिक की निवेश करने वाले उद्यमों के लिए एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर की भी सुविधा प्रदान करेगा। और इसके साथ साथ जो हमारे निवेशक होंगे, इन्वेस्टर होंगे, उनकी स्थापना के लिए अपेक्षित जो अनुमोदन है, उसकी स्वीकृति है या
ग्रांट जब स्वीकृत करेंगे, स्वीकृति हेतु राज्य में ऑनलाइन सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल की भी हमने स्थापना कर दी है। तो ऐसे अनेकों कार्य किए हैं, क्योंकि मैं बहुत विस्तार से नहीं, यहाँ वेबसाइट भी लॉन्च हो गई है, तो उसमें भी आपको बहुत सारी जानकारियां मिल जाएंगी। मैं आज आप सभी से ये अनुरोध करने के लिए आप सबके समक्ष खड़ा हूं कि हम लोग जो काम कर रहे हैं ये राष्ट्र कार्य भी है, ये देव कार्य भी है, क्योंकि देवभूमि के लिए और राष्ट्र के लिए हो रहा है। तो इसमें आप सब लोग भी इसको जहां आपके जो दिन भर का जो काम होता है, आपकी दिनचर्या का जो काम है, उस दिनचर्या के काम में जरूर कहीं ना कहीं स्थान देंगे और इसे अपना समझ के देव कार्य में अपना योगदान देंगे। यही अनुरोध करने के लिए मैं आप सबके आया हूं। अंत में फिर से एक बार आप सभी का मैं यहाँ उपस्थित होने के लिए सभी का दिल से स्वागत करते हुए और धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। Well, thank you very much, sir, for your empowering, at the same time, informative session. Can we have some round of applause, everybody? I will say not only Chief Minister of Uttarakhand, but icon for all of us, inspiration for all of us, so much to learn from you. And we are very sure under your leadership, we will not only learn, but execute and eventually we're gonna achieve. So, ये बहुत ही शानदार शुरुआत है और आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी हमारे मीडिया एसोसिएट्स का। यहाँ पर सबसे पहले कैन वी हैव सम अपलॉज फॉर द मीडिया एसोसिएट्स इन द हाउस, our distinguished personalities from industry, from government, and delegates, and of course our CM sir. Can we have some round of applause for this wonderful session for the summit curtain raiser we had? So before we proceed for the media interaction, I would like to request a few distinguished personalities, please join us on stage. I would